What do you think is the single biggest factor behind people leaving Pakistan? People are losing hope in Pakistan. ऐसे नहीं है कि ये political turmoil या economic turmoil जो भी पाकिस्तान में चल रहा है ये पहले कभी नहीं आया. It's been there, हमारे पास पहले भी आता रहा है, but we always had a hope कि नहीं यार ठीक है 2 साल 4 साल बाद 5 साल बाद things will turn better. But unfortunately this time it's the other way around. People are losing hope कि नहीं यार situation सही नहीं होगी. पाकिस्तानियों में शायद ये एक टेंडेंसी ज्यादा है to not encourage their relatives to join them in the West, चाहे वो अमेरिका हो या वो यूके हो. But this is something very serious. It's like playing with the future of the youth. ठीक है, playing with the future of the youth in your own family. अगेन मतलब एक जो मेन रीजन होता है वो ये है कि हाँ मतलब वी आर सॉर्टेड नाउ, तो वो हमारे साथ कैसे आ जाएं, हाउ कैन दे बी इन द सेम पोजीशन एज वी आर नाउ. एक वो फैक्टर फैमिली फैक्टर होता है, फैमिली जेलसी वाला फैक्टर तो इट्स ऑलवेज जेल्स इन. सेकेंडली ये वाला पॉइंट इफ आई कंपेयर इट टू इंडिया फॉर एग्जांपल, लाइक टिपिकली इंडियन पंजाबीज आर देयर इन कनाडा, इट्स लाइक सेकंड होम. वहाँ पे मैंने देखा है एक बंदा जाता है एंड इवेंचुअली विद इन लाइक 4-5 इयर्स पूरे अपनी टीम को, अपने गांव को, अपने दोस्तों को, सर्कल को, सबको वो लेके आता है वहाँ पे. एज कम्पेयर टू पाकिस्तान कोई एक बंदा चला जाएगा तो लेके मैं अगले को क्यों बुलाऊंगा, मेरा उसमें क्या फायदा है. इफ यू डोंट हैव दैट सॉलिड पिन पॉइंट देयर और रॉक सॉलिड रॉक देयर 3-4 months you'll be frustrated कि मैं क्या कर रहा था. क्योंकि यूजुअली होता है कि अगेन लाइक मिडिल ईस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बिकॉज मोस्टली पीपल आर गोइंग ऑन अ व्हाइट कॉलर जॉब देयर. बट इफ यू गो टुवर्ड्स द वेस्ट यू मे स्टार्ट विद अ ब्लू कॉलर जॉब. और जब आप ब्लू कॉलर जॉब पे पहले दिन खड़े होते हो, द फर्स्ट थिंग इज कि यार मैं पाकिस्तान में एसी वाले कमरे में बैठा था, 4 लोग मेरे नीचे काम करते थे, ड्राइवर गाड़ी निकलता था और मैं यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स पे क्यों खड़ा हूँ. सो दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट कि लोग फ्रस्ट्रेट होकर वहां से वापस आते हैं. जो भी लोग मिलते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि भाई हमने अगर दुबई वगैरह जाना है तो उससे बेहतर हम कनाडा चले जाते हैं या इधर कहीं और चले जाते हैं जहाँ पे एटलीस्ट हमें सिटीजनशिप तो मिल जाएगी. True that. क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये होता है कि यू स्टे देयर फॉर 30 years 40 years, eventually once you retire you are coming back. Yeah. US, well, for example, if you're sorted there, you're not coming back. Even though if you don't have a job, नहीं भी है तो the government will support you. They will never send you back to your country. If you don't have a job, you go back. Middle East में it's like 48 days. यार आपका जॉब खत्म हो गया, वीजा खत्म हो गया, you need to go back. But again, if we see exporting human capital as an industry, कि हम लोग अच्छे solid minds who are going out, earning money there and sending it back to their families in Pakistan. Why not? It's a win-win situation. It's a win-win for them. It's a win-win for Pakistan. मतलब आपकी population का एक major chunk हाँ brain drain हो रहा है, but eventually they will come back or they will send remittance to Pakistan, and that will make help you make other opportunities. Assalamu alaikum everyone. This is Ammaar bin Salim. Welcome to another episode of Outloud with Ammaar. This is episode 9 and we are concluding season 3. बस एक और episode रह गया and then inshallah we'll be done with season 3 and the recording for season 4 will begin. But thank you for joining us today. Today we're going to be talking about something that concerns most of the Pakistani youth and also the people who are somewhere in the middle of their careers. So वो भी है और काफी सारे लोगों का concern बन गया है to look for opportunities outside Pakistan. तो अगर आप थोड़े से स्टार्ट्स वगैरह को रेफर करेंगे यू विल फाइंड एंड अभी थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा कि मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी सही या गलत है. बट ऑलमोस्ट इन द लास्ट 1.5 year 12 lakh Pakistani people have left Pakistan in the search of better employment opportunities outside Pakistan. अब उसमें कौन सी पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं? UAE has traditionally been very very popular, UK, the US and now Canada as well. और क्या रीजंस होती हैं as to why many people are leaving Pakistan? और इसमें अगर इमिग्रेशन करना है या पाकिस्तान से बाहर जाना है, what are the expenses, what are all those things, कितने चांसेस होते हैं? तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए I am privileged and बहुत खुश भी कि we have an expert in immigration joining us today, and he is not just an immigration expert, he is also a licensed consultant. So we have been joined by Ali Shahab from Ask Ali. Ali, thank you very much for joining us today. Thank you very much, Ammaar. Thanks for having me here. Oh, it's my pleasure. And this is something जैसे मैं बता भी रहा था कि many Pakistani people are now thinking about moving out of Pakistan in the search of better employment opportunities. And it's not just limited to employment opportunities, but also in the wake of the political situation कह लें या उसके अलावा लोग जो है वो better work life balance के लिए भी जाना चाह रहे हैं and for a change of scene as well. तो आज आपसे जो है हम काफ़ी सारी discussion वो करने वाले हैं इन सारी चीज़ों के बारे में. But before we get into that, what do you think?
Why are many people in Pakistan leaving? What do you think is the single biggest factor behind people leaving Pakistan? Amar, in my opinion, to be very honest, people are losing hope in Pakistan. Mm-hmm. ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिकल टर्मोइल या इकोनॉमिक टर्मोइल जो भी पाकिस्तान में चल रहा है ये पहले कभी नहीं आया. इट्स बीन Mm-hmm. देयर, हमारे पास पहले भी आता रहा है, बट वी ऑलवेज हैड अ होप कि नहीं यार ठीक है, 2 साल 4 साल बाद 5 साल बाद थिंग्स विल टर्न बेटर. बट Mm-hmm. अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम इट्स द अदर वे अराउंड. पीपल आर लूजिंग होप कि नहीं यार सिचुएशन सही नहीं होगी. एंड दैट्स द प्राइमरी रीजन पीपल आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन कि चलो ठीक है, लेट्स सिक्योर आवर फ्यूचर, look for a better future for our kids and for Mm-hmm. ourselves too. So that's one of the main reasons like people are moving out because they've lost hope. Because they've उनको lost hope. पाकिस्तान में future बहुत अच्छा नहीं देख रहा. To be very honest, I have come across clients coming from C level अच्छा. employment. अच्छी अच्छी companies पे multinational पे C level पे हैं and they are in the process of leaving Pakistan. और जब उनसे मेरी discussion होती है because like immigration is just not just like I'm selling something, it's like more of a counseling too कि क्या क्या Mm-hmm. opportunities हो सकती हैं, what exactly you aspire for when you're going out. तो उनका जो Mm-hmm. प्राइम है कि हमने अपनी जिंदगी गुजारी, वी नीड टू लुक फॉर आवर किड्स. उनको Right. सिक्योरिटी, उनको एक अच्छा फ्यूचर देना है, उनको एक स्टेबल फ्यूचर देना है. Mm-hmm. सो इट्स नॉट समथिंग कि लाइक सिर्फ वर्किंग क्लास बाहर जा रही है. इवन लाइक टॉप एग्जीक्यूटिव्स दे आर लीविंग कंट्री. जो यूथ है Mm-hmm. दे आर गोइंग ऑन स्टडी परमिट, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर एन एग्जिट. एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर एन आउट के बस पाकिस्तान से निकलो टू लुक फॉर अ बेटर फ्यूचर. बट जो मेरी जि- जितना भी क्रक्स है मेरे उसका, दैट्स मोर टुवर्ड्स दे लॉस्ट होप कि पाकिस्तान में अब मेरे ख्याल से अगले 10-15 साल में इट विल बी टर्बुलेंट, सो इट वोंट बी अ स्मूथ जर्नी. अच्छा, ये वैसे एंड बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात दैट्स बोली कि एक किसी एक पॉइंट पे पाकिस्तान में ना होप होती थी. फॉर इंस्टेंस जब मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था, या मतलब आई एम श्योर वी वुड हैव ग्रेजुएटेड अराउंड द सेम टाइम, तो उस टाइम पे एक होप थी, नहीं यार पाकिस्तान में रहना है. पाकिस्तान में वी हैव सीन पीपल ग्रो, एंड इट्स नॉट लाइक दिस कि पाकिस्तान में आज लोग ग्रो नहीं कर रहे, लोग ग्रो जरूर कर रहे हैं. बट वो जो होप थी ना, वो आज इवन इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई से द सेम थिंग यार, मुझे अब एट द एंड ऑफ दिस टनल द लाइट सीम्स क्वाइट डिम फॉर पाकिस्तान. मतलब मैं अगर या अपने दोस्त से भी एक दिन बात कर रहा था, एंड वी वर डिस्कसिंग द सेम थिंग कि यार, इफ वी आर टू रिटर्न 25 बिलियन यूएस डॉलर्स एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो पाकिस्तान तो $1 बिलियन लेने के चक्करों में है, तो $25 बिलियन में वापस कैसे करने पर एनम. एग्जैक्टली द पॉइंट. मतलब कहाँ से देगा? एंड ऑब्वियसली इट विल बी कमिंग फ्रॉम आवर पॉकेट्स. इवेंचुअली हम्म. यू एंड अप पेइंग मोर टैक्सेस, आपके जो फैसिलिटीज हैं देयर विल बी अ कट ऑन इट. और या. इवेंचुअली डाउन द लाइन चीजें और टाइट टाइट होती रहेंगी. इनफैक्ट यू वोंट हैव लाइक स्पेस टू ब्रीथ. मतलब 10 साल पहले वी हैड दिस सिचुएशन, सिमिलर सिचुएशन आई थिंक व्हेन 98 99 जब सारा पॉलिटिकल टर्मोइल चेंज हुआ था. वी स्टिल हैड दिस थिंग कि चलो ठीक है, अब ये वाली को बताएगी गवर्नमेंट आएगी, थिंग्स विल गो बेटर. लेकिन या. अब इट्स प्रीटी ब्लीक. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो नजर नहीं आ रही चीज जैसे वो कभी हमें लगा करती थी. अच्छा चले, मैं इससे पहले कि यार पाकिस्तान के लिए कौन सी पाकिस्तानियों की डेस्टिनेशन जो है वो अच्छी चल रही हैं, कहाँ पे अली जो है वो हेल्प कर सकते हैं, एक बड़ी मजे की चीज मैंने नोटिस किया, मजे की चीज के या पेनफुल चीज के, बट दिस इज समथिंग दैट कभी कभी हमें लगा करता था यार, अच्छा दिस इज हैपनिंग टू ओनली अ सिलेक्ट फ्यू एंड नॉट टू एवरी वन. बट नाउ इट फील्स के जो भी लोगों के हमारे खसूसी तौर पर पाकिस्तान में जो रिलेटिव्स वगैरह जो हैं 10-20 साल पहले पाकिस्तान से चले गए, पाकिस्तानियों में शायद ये एक टेंडेंसी ज्यादा है टू नॉट encourage their relatives to join them in the west, चाहे वो अमेरिका हो या वो यूके हो. तो वहां जाके वो एक वो मुझे एक जो है मीमर उनकी भी आ जाती है यार कि मतलब ऐथे ना ऐथे हालात बड़े बुरे है, और वो बंदा जो है खुद पाउंड्स में कमा रहा होता है. तो ऑल्सो मतलब आई हैव गिवन इट अ फनी स्पिन, but this is something very serious. It's like, playing with the future of the youth. ठीक है, playing with the future of the youth in your own family. तो what do you think, मतलब आपका अपना ओपिनियन इसके ऊपर क्या, why do people do that? अगेन मतलब एक जो मेन रीजन होता है वो यही है कि हाँ मतलब वी आर सॉर्टेड नाउ, तो वो हमारे साथ कैसे आ जाएं, हाउ कैन दे बी ऑन द सेम पोजीशन एज वी आर नाउ. एक वो फैक्टर फैमिली फैक्टर होता है, फैमिली जेलसी वाला फैक्टर तो इट्स ऑलवेज जेल्स इन. सेकेंडली ये वाला पॉइंट इफ आई कंपेयर इट टू इंडिया हाँ. फॉर एग्जाम्पल, लाइक हाँ. हाँ. टिपिकली इंडियन पंजाबीज आर दे इन कनाडा, इट्स लाइक सेकंड होम. वहां पे Yeah. मैंने देखा है, एक बंदा जाता है एंड इवेंचुअली विद इन लाइक 4-5 years पूरे अपनी टीम को, अपने गांव को, अपने दोस्तों को, सर्कल को, सबको वो लेके आता है वहां पे. एज कम्पेयर टू Yes. पाकिस्तान की कोई एक बंदा चला जाएगा तो लाइक यार मैं अगले को क्यों बुलाऊं, मेरा मेरा उसमें क्या फायदा है. हाँ. हो सकता है कि हाँ वो मेरे इसमें आएगा और ये ना हो कि वो मुझे एक्सप्लॉइट करें यहाँ पे. मतलब वी शुड बी थिंकिंग ऑफ अ लार्जर पिक्चर कि हाँ अगर एक एक सॉर्टेड हो के मंथली, हाँ इनिशियली मसला होता है
सेटलमेंट इज एन इशू दे, इट्स नॉट समथिंग इट्स ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड. 2-3 साल की टर्बुलेंस है, आप आगे गुजार लोगे, योर हिज जनरेशन विल बी सॉर्टेड. Yeah, exactly. Exactly. I usually speak to people जब लोग मेरे पास आते हैं for consultation. I always say, you have property, you have a lot of property, but eventually down the generations वो split होके वो खत्म हो रही होती है, खत्म हो रहा है. right? You have a lot of money in your bank account, आपके बच्चों में split होगा, उनके बच्चों में split होगा, and eventually it will die off. On the other hand side, जो passport है, passport is something which grows in generation. आपके पास आया, आपके बच्चों के पास आया, उनके बच्चों के पास जाएगा, तो it's just one asset that is growing over the generations as हम्म. compared to typical assets जो कि diminish हो जाते हैं over the period of time. तो हम्म. इसमें थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, स्पेशली पाकिस्तानीज को, कि यार मतलब वंस यू आर देयर ट्राई टू हेल्प पीपल कि आओ और ज्यादा बाहर आओ. एंड इट्स हाँ. नॉट समथिंग, एक हम लोग नेगेटिव कनोटेशन आ जाता है उसमें कि यार नहीं पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो उसको हमने सपोर्ट नहीं करना एंड स्टफ. इट्स द अदर वे. यू शुड ऑलवेज गो आउट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड सपोर्ट पीपल. बट इट्स अ टिपिकल पाकिस्तानी ट्रेड कि यार मैं चला गया हूँ तो मैं बाकियों को क्यों बुलाऊं अपने पास. क्यों बुलाऊंगा मैं. अच्छा नहीं, वैसे वाकई में अक्सर मैं भी अपनी वीडियोस वगैरह में जो है ना ये बात कर रहा होता हूँ कि फॉर इंस्टेंस अभी आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जो ओशन गेट का जो है एक जब वो सबमर्सिबल जो है वो गया उधर टाइटैनिक के साइट पे, तो बहुत लोगों ने कहा यार इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके जो है जाने की क्या जरूरत थी. माई पॉइंट ऑफ व्यू वॉज अ बिट डिफरेंट एंड इट वॉज कि यार पीपल जनरली स्पेंड hefty amounts of money on exploration and on adventures. तो मतलब people can disagree with me. I'm not saying my word is final, but at the end of the day हमें एक चीज मिसिंग नजर आती है ना पाकिस्तान में, वो ये है कि यार मेरे बड़ों ने जो है वो एक काम किया था और मैंने भी शायद आगे इसी तरह ही करना है. एंड इफ आई हैव चोजन वन फील्ड आई हैव टू स्टिक टू इट. और मैंने जो है एडवेंचर्स वगैरह, मुझे लगता है कि वो डिस्करेज अगर नहीं किए जाते तो इंकरेज भी नहीं किए जाते. तो वो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पॉइंट बिल्कुल मतलब लूसिड है. मगर मगर एट द सेम टाइम आई वंडर कि हमारा कल्चर इतना ज्यादा जो है ओवरलैप करता है इंडियंस के साथ, बंगालियों के साथ, और उसके बाद भी फैमिली वैल्यूज में हमें मान नजर आता है कि यार दे लुक फॉर ईच अदर एंड वी डोंट व्हेन वी गो आउट. तो वो आई थिंक फैमिली जेलसी वाली चीज जो है वो काफी ज्यादा आती है. आ जाती है, वो इवेंचुअली आ जाती है. वो मैंने देखा है, मैंने आई हैव सीन लाइक अ लॉट ऑफ पीपल दे. Luckily I've been exposed to Middle Eastern market, I've been exposed to UK, I lived there for 3 years, I've lived in राइट. Canada for 6 years. So I've seen different, हर जगह, मतलब it's not something in Canada only. अब यूके में भी हम्म. the same. लोगों की थिंकिंग है कि नहीं यार मैं आ गया हूँ स्टडी परमिट पे तो मैं अपने अगले भाई को या कजन को हेल्प आउट नहीं करूँ. क्यों नहीं करूंगा? बस नहीं करना. करना क्या नहीं है. रीजन है नहीं करना? यहाँ पे मुश्किल है. हाँ मुश्किल आती है, कहीं भी जाओगे मुश्किल तो आती है, बट लेट देम, गिव देम अ चांस ना, ये तो लेट देम. पाकिस्तान में भी तो मुश्किल है. लेकिन वो देखो नहीं, पाकिस्तान में एक कांस्टेंट वो है कि देखिए पाकिस्तान में यशी है, या पाकिस्तान में यशी, उसके लिए वो अर्निंग इन डॉलर्स, एंड हाँ. दैट विल हेल्प. वंस यू हेल्प देम कम देयर, गेट अब्रॉड, एंड या. देन दे विल स्टिल हैव अ यशी टू इन पाकिस्तान. लेकिन वो उस चीज हम्म. को फिगर नहीं करते वो. उनको जस्ट होता है कि नहीं यार पाकिस्तान में यशी है और यहाँ पे बहुत मुश्किल लाइफ है, बिकॉज दे हैविंग लाइक डिसेंट लाइफ दे, अच्छा खर्चा चल रहा होता है यार, एंड दे हम्म. हो रहा है होने, तो इट्स ओके. पाकिस्तान हम्म. जाएंगे तो देखेंगे क्या करना है, वी विल हेल्प देम सम अदर वे, वी कैन या गिव देम मनी ताकि हाथ हमेशा ऊपर रहे. Exactly, exactly. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा खैर अली, what do you think, what are the major challenges that the people face when they're leaving Pakistan? मतलब पाकिस्तान से जो है जाना भी इतना आसान काम नहीं है. What do you think are some of the biggest hurdles that people face? एक तो माइंडसेट को चेंज करने आसान काम नहीं है, मुझे तो लगता है. फॉर एग्जाम्पल एक कोई बंदा पहली मरतबा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, राइट, बी एट मिडिल ईस्ट, बी एट यूरोपियन कंट्रीज, बी एट यूएस और अमेरिका, सो एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आप या. पहली मरतबा पाकिस्तान से, इट्स अ कल्चरल चेंज, राइट, इट या. टेक्स टाइम टू अडैप्ट टू द कल्चर, डिफरेंट कल्चर यू आर देयर. वो एक सबसे बड़ा हर्डल आता है. इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम काइंड ऑफ अ रूरल बैकग्राउंड, तो उसको वो अडैप्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, एंड एट टाइम्स दे गिव अप. सो दैट इज वन हम्म. ऑफ द. सेकेंडली, आप कभी भी किसी भी मुल्क में जाते हैं, यू ऑलवेज हैव टू लर्न द कंट्री. उसका अपने कल्चर समझना है, आपने उसकी इकोनॉमिक्स समझनी है, उसकी इकोनॉमी में देखना है कि आपने किस सेटल डाउन होना है. Then obviously you have expenses in the first few 6 months, 6-8 months. You are just incurring expenses because you're settling down. तो वो ठीक है. एक साइकिल आपने चलाना स्टार्ट करना होता है कि yes, I've started earning enough कि मैं या. उस चीज में लगा. That takes time. That made, I always say, I always advise my clients कि it takes you at least 2 years of turbulent time. Turbulence 2 साल रहेगी उसकी, हम्म. क्योंकि उसमें कल्चर, आप एक एनवायरमेंट को समझ रहे होते हैं, लोगों को समझ रहे होते हैं, how to communicate with them, how to deal with different hierarchies there. तो वो जो या. learn, that is the most difficult one. For example, आप मिडिल ईस्ट जाते हैं, comparatively easier
because mostly you go on a job there, you find a job there, आपको जो economic cycle है वो start हो जाता है. हाँ But if हाँ. you move to Yeah. the west, आपको पहले वहां पे जाना है, वहां पे जाके सेटल डाउन होना है, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर अपने कि आपने इनकम कहाँ से जनरेट करनी है, देन यू स्टार्ट रोलिंग द बॉल. इट टेक्स टाइम. तो ये वाला Yeah. जो शुरू के 2 साल होते हैं, दीज आर द मोस्ट टर्बुलेंट मंथ्स, और उसी में आपको बस थोड़ा सा होना पड़ता है कि यू नीड टू फाइंड अ रीजन कि यार मैं किस चीज के लिए आया था. क्यों आया था मैं? अब आई हैव आई हैव कम अक्रॉस अ क्लाइंट, उसका जाने का रीजन क्या था, क्योंकि मेरा खाला का बेटा चला गया है तो मुझे भी जाना है. अच्छा, वो कंपैरिजन वहां, इधर भी है. जी हाँ, मेरा खाला का बेटा गया था कनाडा, तो मैंने भी कनाडा जाना है. He went there. He was in a very good MNC, working in MNC Pakistan. वो सब Right. छोड़ छाड़ के गया वहाँ पे. Literally he stayed for 4 months. Unfortunately, he was there in winters. Oh तो my उसको God. बर्फ वाला इशू था, And he had and he gone to back कर which state? Which province? Toronto. 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 Yeah, अच्छा. so he went to Toronto. He stayed there for like 4 months and literally packed everything with family and he came back. He was like, "Okay, this is not for me." So again, Hmm. there's a kind of an advice there. आप कभी भी पाकिस्तान से निकल रहे हो for good, for a better future, you should have a very solid point कि मैं इस reason की वजह से पाकिस्तान से निकल रहा हूँ. It could be a betterment for the family. It could be something financial. It could be security wise. मेरा ये reason था. मैं इस reason से Hmm. पाकिस्तान से जा रहा हूँ. And then when you in the first 2 years you face the hardships, you know exactly कि मैं इस reason से आया था, और अब मुझे इस reason की वजह से I have to go through this, and I know exactly inshallah within a year and a half, 2 years I'll be done. If you don't have that solid pinpoint there, or rock solid rock there, you will be astray. 3-4 months you'll be frustrated कि मैं क्या कर रहा था, क्योंकि Yeah. usually होता है क्या है कि again like Middle East थोड़ा सा different हो जाता है because mostly people are going on a white collar job there. But if you go towards the west, you may हाँ हाँ. start with a blue collar job. और Yeah. जब आप Yeah. ब्लू कॉलर पे पहले दिन खड़े होते हो, द फर्स्ट थिंग इज कि यार मैं पाकिस्तान में एसी वाले कमरे में बैठा था, 4 लोग मेरे नीचे काम करते थे, हाँ. ड्राइवर गाड़ी निकलता था, और मैं यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में क्यों खड़ा हूँ. सो Hmm. दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट के लोग फ्रस्ट्रेट होकर वहां से वापस आते हैं. तो अगेन, इवन इफ यू डूइंग द ब्लू कॉलर जॉब, इफ यू हैव दैट रॉक सॉलिड देयर कि यार मैं इस रीजन से आया था, उसके लिए अब जो भी हार्डशिप आएगी आई विल फेस एंड इंशाल्लाह आई विल कम अप. तो इफ Hmm. यू हैव दैट रीजन, यू आर गुड. इफ यू डोंट हैव अ रीजन, आई एम टेलिंग यू, यू आर कमिंग बैक. Acha, yeah, I think this is important. This is something that not many immigration consultants would say. That you should be, if you're considering leaving Pakistan, regardless of the country that you plan on going to, you must know your why. You must know your motivation for leaving Pakistan. Because if you forget that, or if you're not actually clear about it, then you are coming back to Pakistan, and that means that you are not only, it's not something only demoralizing, but at the same time, it's also a huge loss of money too, because moving to Canada, moving to any other country, is an expensive undertaking. This is what my idea is. So, or walking, it's important to know your why, and the how becomes easier. So yes, I agree with you on that. अच्छा, एक अली एक चीज बताएं, in the last few years we have seen that many of the people from India, people from Pakistan, people from South Asian countries, South Asian East Asian countries, they prefer moving to Canada as compared to other countries. What are some of the major reasons as to why people are preferring going all the way to the north of the world and not to Gulf countries? इसकी मतलब Gulf countries और countries भी ले लें, but why is there a certain inclination towards moving to Canada और दूसरी countries के निस्बत? होता क्या है, if you, in my opinion, there are like 4 different markets. Number one is Australia, number two is Okay. UK, number three is US, number four is Canada. In the English speaking countries you're looking for. Okay. Canada may from day one you have a clear path. Okay, for example, I am on a work permit or I'm on a study permit. After 2 years I'll have my postgraduate work permit. Uske baad, after 3 years I'll apply for PR. After 2 years I'll apply for citizenship. So that's my Okay. journey. Second year I'll be applying for the passport. You know exactly day zero, right? As compared to other countries, UK में it's the other way around. You have, for example, if you start a journey, you एक बच्चा जा रहा होता है. If you look into this journey of a student, स्टडी परमिट में जाता है, ही स्टडीज देयर फॉर अ ईयर, मास्टर्स किया उसने, उसको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिला, 2 साल का पोस्ट एंजॉय किया, उसके बाद क्या है, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज either you are you have to change your tier in order to get to ILR, indefinitely to remain. So that's a question. इतना पैसा लगाया पढ़ाई पे, उसके बाद आपने 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क एंजॉय किया, और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क. either you are running after the US के either you support me to change my tier, या तो आप शादियां कर रहे होते हो, या फिर आप asylum अप्लाई कर रहे होते हो. UK, that's a pretty common scenario there. Australia on the other hand, उसमें भी थोड़ा सा reluctance इस तरफ जाती है कि they are not code based
उनके जो इमिग्रेशन होती है. So हाँ you go हाँ. there for मास्टर्स के लिए जाते हो, मास्टर्स के लिए जाते हो, you study, you get a work permit, and then by the time you're applying for the PR, they may change the knockouts. कि for example हमें 5,000 लोग चाहिए थे into maybe mechanical engineering, our quota is done. अब जिस बच्चे ने 4 साल का बैचलर्स किया वहां पे into mechanical engineering, by the time he's ready to apply for PR, वो कोटा खत्म हो गया. And then he's stuck again कि मैंने 4 साल की फीस दी, मैंने सब इन्वेस्ट किया अपना ऑस्ट्रेलिया में, and eventually there's a question mark again. So that's a downside for Australia. यूएस का मसला ये होता है कि यूएस में यू गो दे, यूएस में यू गो ऑन F1 F2 वीजा स्टडी परमिट, यू स्टडी दे, एंड इवेंचुअली यू हैव टू कम बैक. यू आर गिवन 6 months टू फाइंड एन जॉब. आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, कैन स्विच यू फ्रॉम स्टडी परमिट टू वर्क परमिट, यू आर गुड, अदरवाइज यू आर कमिंग बैक. अच्छा. तो ओके. कनाडा ऑन द अदर हैंड, यू हैव क्लैरिटी ऑन डे वन कि यस एग्जैक्टली मैं 1 साल की पढ़ाई करूंगा तो मुझे 1 साल का परमिट मिलेगा. आई स्टडी फॉर 2 years, आई गेट अ 3 year वर्क परमिट. Year I'll be applying for PR. PR के बाद I'll be applying for citizenship, and the cost more or less is the same for all 4 markets. So that's one of अच्छा. the main reasons people are opting for Canada, that they can see the clarity. For example, मैं अगर 50-60 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो I would expect a clarity क्या है, मुझे मेरा future क्या है, because mostly people coming from the subcontinent, Pakistan, India, Bangladesh, इस साइड से जो भी जा रहा होता है, one of the main reason is not to study but to settle there. एग्जैक्टली. जो भी लोग मिलते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि भाई हमने अगर दुबई वगैरह जाना है तो उससे बेहतर हम कनाडा चले जाते हैं या इधर कहीं और चले जाते हैं जहाँ पे एटलीस्ट हमें सिटीजनशिप तो मिल जाएगी. True that. क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये होता है कि you stay there for 30 years, 40 years, eventually once you retire, you are coming back. Yeah. US, well, for example, if you're sorted there, you're not coming back. Even though if you don't have a job, नहीं भी है तो the government will support you. They will never send you back to your country. If you don't have a job, you go back. Middle East में it's like 48 days. यार आपका जॉब खत्म हो गई है, वीजा खत्म हो गया, you need to go back. Either find an employer or go back. इसलिए Canada is kind of a lucrative market for everyone around the world. Yes, you're looking for settlement. One reason number one. Reason number two for Canada is like Canada की total population is approximately 38 million to 40 million. 40 million नहीं मतलब 4 करोड़ इतनी हमारी कराची की आबादी है. And by land, it's the second largest country in the world. So they have opportunities for everyone. Even I would say for the next 30 years, they're still growing. Because they have enough land, they have enough regions to populate. And they want taxpayers to pay for the retirees. So the immigration in Canada will be go hand by hand for the next 30, 40 years, at least what I can see, because the immigration is linked to the economy. It's another like a reason कि हाँ मैं जा रहा हूँ तो for me I'm sorted for at least in our lifeline we are sorted. You go to Canada, you're in the business, you retire, government will support you, your kids are there, so it's easier settlement. Easier settlement. And lastly, one more point. I've been there. I haven't come across any racism. Racism is one of the main issues, right? If you go to Europe, you go to Australia, you go to US, you always somehow or the सुन रहे होते हैं कि यार रेसिज्म का हुआ, किसी ने मुझे कोई टॉन्ट मार दिया, किसी ने कोई बात कर दी. Canada is a extremely nice place to raise a family. If you're looking for Muslim populated areas, you will get हर कोने पे आपको हलाल मिल जाता है. There are mosques all around. आपको वो वाला issue नहीं है कि religion का क्या मसला है. You can dress the way you want. Nobody will come and question you. So you have like a lot of opportunities there, even to grow a family there. As compared to US or UK, जहाँ पे थोड़ा सा culturally they are more open. Canada still like under control. So third reason for people to choose Canada is there. यानी मतलब religious freedom भी आपको मिलती है. You get freedom of speech as well. You get that additional benefit of getting citizenship, which is something that is permanent and everybody is looking for that. जाहिर बात है आप पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हो तो आपके दिमाग में ये तो होगा कि यार मैं पाकिस्तान जल्दी जो है वो वापस नहीं आना चाहता, या एटलीस्ट अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता हूँ तो आई शुड बी making all those investments in a country where I can reap the benefits out as well. So of course makes a lot of sense. Achha, so if somebody considers going to Canada, so what would be the first step? किस वीजा पे वो जाएंगे, क्या करेंगे वो, किस तरह से, how would they evaluate which visa would be perfect for them? There are 5 routes to Canada. Number 1, that's study permit. हर जो group है that's defined by the age bracket. So the youngest one starts from a study permit, maybe you're 20 to 26, 27 is your study permit slot. You may qualify for a study permit. Second option comes in FSW, Federal Skilled Worker, commonly known as Express Entry in Pakistan. That age group is 26 onwards to 29. Because the moment you turn 30, you start losing 5 points every year. So like from 26 onwards,
to 29 you are there. FSW की main requirements होती हैं, you got to have masters, 3 years of experience and a good IELTS. अच्छा, So मास्टर्स if उसके you लिए जरूरी है? it's a ओ, point-based system. So अच्छा. the second option is called FSW Express Entry. Third option is called provincial nomination programs. Like out of all 10 provinces and territories, every province has their own provincial nomination programs. जहाँ ओके. पे they make people according to occupation and demand. If they have a shortage of some, for example, specific drivers, let's say Saskatchewan is one हम्म. of the places where usually ज़्यादातर trucking companies होती हैं, so they're always in need of drivers. So ओके. SPNP may have a special slot for drivers there. So all provinces have their own shortcomings. और उसके हिसाब से they keep on devising their own immigration plans. ओके. So option number 3 is called provincial nomination program. Option number 4 is technically getting a work permit from Canada. For example, if there is an employer in Canada who wants certain specific skill set, वो हम्म. दुनिया में कहीं भी available है, so they can hire someone from overseas and they can bring them to Canada and eventually convert to PR followed by citizenship. राइट. Last option comes in startup visa, business immigration. That's typically for people who are in their early 40s or late 30s who have a well settled life in Pakistan, property भी है, पैसा भी है, हाँ. अच्छी job चल रही है, and now they're looking for an out कि बस पाकिस्तान से अब निकलना है, हालात सही नहीं है. So for them, it's an ideal sweet spot that they can go on a startup visa. They can come up with a good, innovative business idea, which is a little novel in Canada. वहाँ पे जाएंगे, they establish it, and then they get PRs and work permits accordingly. So these are the 5 options to Canada, and obviously, lastly is visit visa, converting to work permit. Converting work permit and then work permit converting into citizenship. To PR, then to citizenship. Yeah. Into PR, then into citizenship. Acha, acha, acha. And which one's the most famous for Pakistanis generally? I guess Express Entry and the PNP program. For Pakistanis, primarily is express entry, and the startup visa is getting a lot of weight these days. क्योंकि typically होता है startup visa, on average, what I'm charging people is like 75,000 CAD. That's approximately 1.5 CR to 1.6 CR. I'm coming across clients. होता क्या है, पाकिस्तान में आप civic भी 1 करोड़ रुपए की है, right? So if you have one or two cars, or you have a 5 मिनट like a plot भी है, you just sell it off and you fund your process. So startup visa is gaining quite a lot क्योंकि to FSW Express Entry, recently the scoring system has gone up. It's been into 480s. A lot an ideal profile or Pakistan का जो maximum profile होता है, what they can get is 467 or 473 max. So they're not calling FSW unless they score CLB 10 in IELTS, which is Pakistan के लोग. Which is rarely happens. Exactly. मतलब वो तो वैसे नजर नहीं आता होते, तो इसमें कैसे? Exactly. और एक और मसला भी है ना, जब तक हम पाकिस्तानी आइल्स को आइलेट्स कहते रहेंगे तो जब तक वो आइल्स तक नहीं आएंगे तब तक थोड़ी सी मुश्किल है. No, I think it's important to understand that it's not to make fun of anyone. That's not the intention, of course. The idea is that when you're planning on moving out of Pakistan, you have to understand that English is that universal language that's gonna get you there. Otherwise, आप नहीं कर सकते, and that's very true. ये ऐसा नहीं कि आप वर्क परमिट पर जा रहे हो और आपने वहां पर ट्रक ही चलाना है तो आप जो है सिंपल आप कर जाएंगे और उसके लिए इंग्लिश इतनी ज्यादा जरूरी शायद ना भी हो इंग्लिश की टेस्टिंग. इट्स द आइडिया इज कि आपका स्कोर ये मैटर करता है आपकी कैनेडियन इमिग्रेशन के अंदर. इट्स ऑनेस्टली इट्स एवरीवेयर. आप be it Australia, be it UK, any English speaking country, if you don't know the language, how are you going to survive there? मतलब we see that in Arab especially. मतलब वहां पे जहाँ पे लोगों को अंग्रेजी भी नहीं आती, वहां पे आप कैसे कम्युनिकेट करोगे if you don't know Arabic? Exactly. तो वो इशू यहाँ पे भी आता है. और पाकिस्तान में I don't know, मतलब हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, people are scared of IELTS for no reason. They are just scared of IELTS. Once they start preparing for it, once they appear for IELTS, they're like, ये तो बहुत आसान था. लेकिन कई सारे ऐसे लोग कहते हैं यार हमने दिया IELTS, it was a piece of cake for us. हाँ, लेकिन एक स्टिग्मा अटैच है कि पता नहीं IELTS है क्या है, मुश्किल है, हमने उसको बहुत प्रिपेयर करना है. एंड आई एम ऑलवेज लाइक कि इट्स एन अनसीन एग्जाम. आप प्रिपेयर किस चीज के लिए करोगे? यू आर फॉर एग्जांपल 27, nobody can teach you English now. It's just tips and tricks. Go in the sit in an exam and it'll be all good. और जब वो वापस आते हैं हाँ ये बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था उसमें. लेकिन मुझे वैसे लगता है कि sometimes people confuse IELTS with English language, with spoken English.
Yeah. And but to get to IELTS, you do need to have good language skills. I think there's no denying that. For certain scores, yes, you For need to certain have a schools, proficient exactly, of for that. course. But again, in general, you don't need much. मतलब ज़्यादातर programs need 5 bands. 5 bands is something that's pretty basic. हाँ, लेकिन तो 5 मैक्स में फिर वो जो है वो इमिग्रेशन के चांसेस वो डिम नहीं हो जाते ये FSW और PNP वगैरह पे? हाँ मतलब for example, if you're looking for a work permit, हम्म. अब उसको categorize करेंगे ना मतलब the kind of an applicant you're coming for. For example, an या FSW applicant हाँ हाँ. must be masters, must have an experience, so obviously they should score good in IELTS. But somebody who's coming for a work permit, उसके लिए तो it's a basic IELTS basic चाहिए. Even for या this startup visa, you need 5 because again it's a business immigration. तो वो people who हाँ are या a little scared यार IELTS देना है, IELTS तो नहीं देना पड़ेगा. IELTS के बगैर कुछ बता दे. मैंने कहा visit visa is the only option without IELTS. तो उस पे आके a lot of people are like अच्छा चलो ठीक है देखते हैं देखेंगे. we'll get back. मुझे लगता है उसमें अच्छे अच्छे लोग मतलब people who are financially very very sound and from with ties to Pakistan and properties and all of those things, मेरे ख्याल में वो रह जाते होंगे वहाँ पे. हाँ मतलब इवन I've seen like people masters अच्छा खासे पढ़े लिखे लोग हैं. I can see मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि yes they are well spoken और Right. उसके बाद भी उनको आइल्स बोलो तो दे लाइक अच्छा चलें ठीक है बताते हैं फिर देखते हैं. And then eventually they come back because they go and look around, shop around, see कि हाँ they don't have any option other than IELTS. नहीं नहीं So they come back. वो तो मेरा ख्याल है कैनेडियन इमिग्रेशन को या जो भी इमिग्रेशन टू दीज कंट्रीज वो देख रहे होते हैं, देयर इज लिटरली लाइक नो वे अराउंड अराउंड आइल्स. आप यू कांट स्किप इट. Exactly. मतलब हो नहीं सकता. And if there is an agent who tells you that you can skip IELTS or you can score a score as low as 4, and because we have come across posters as well, so it's a blatant lie. That's it. It is. And the worst part is people believe it. There is a segment जो होता है कि नहीं है वो तो चार चार बैंड्स कह रहे हैं तो 5 बैंड्स कह रहे हैं वो कहता है IELTS की जरूरत ही नहीं है तो आप क्यों IELTS मांग रहे हैं. हाँ. इसलिए क्या okay, मेरी नजर में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जिसमें IELTS नहीं चाहिए. वो कुछ कह रहा होगा तो ओके जस्ट गो विद हिम. Yeah. चेक करो वो क्या कह रहे हैं. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि the agents who are selling you the idea of Canadian immigration, they say that they have some sort of a stronghold or some sort of a strong arm with the Canadian embassy or with the Canadian immigration process, by virtue of which they can have the IELTS requirement lower down for you, something like that. Yes, this happens a lot, and especially in this rural side. जो आपका रूरल पंजाब आ जाता है इस साइड पे इवन लाइक आई वुड से लाइक रूरल पंजाब भी निकाल दें. अच्छा. आई एम फेज 5 लाहौर. फेज 5 में देयर इज अ कंसल्टेंट ऑब्वियसली आई विल नॉट नेम देम बट मजा नहीं आ रहा उन फिर ऐसे. नहीं मतलब विशी से नहीं जेनस हुआ क्या तो नहीं फनी नहीं, आई स्टोरी. गेट इट, आई गेट इट, आई गेट एक क्लाइंट मेरे पास आया उनका और वो कह रहा था कि सर वो वहां पे खातून बैठी हुई है फेज 5 में और वो कह रही है कि मैं आपका 15 दिन में वीजा निकलवा दूंगी विजिट इट. वीजा. अच्छा. अच्छा. लाइक ठीक है उस वक्त की प्रोसेसिंग टाइम चल रहा था 7 to 8 months. ओके. मैं कहती और मैंने कहा अच्छा 15 दिन में कैसे निकलवा देंगे उन्हें ये क्या विजिट पता है वीजा की कहती बात है कर रहे हैं हम? विजिट वीजा. ओके. तो कहती है 15 दिन में निकलवा देती हूँ और आपने मुझे 4 लाख देने 2 लाख आपने अभी देने 2 लाख आपने मुझे बाद में देने. और मैंने कहा कैसे निकलवाती हूँ 15 दिन में. तो शी वाज लाइक यार वो उनकी स्टोरी ये है कि वो जाती हैं हर 2 वीक्स के बाद अबू धाबी जाती हैं कैनेडियन एम्बेसी में जाती हैं वहां पे जाके अपनी फाइल्स ऊपर निकलवा के रखती हैं और उस पर अप्रूवल्स लेती हैं और फिर वापस आती हैं. मैंने कहा अच्छा. ओके अच्छा. ठीक है. मैंने कहा मुझे उनका नंबर दो. मैंने कहा इंटरेस्टिंग है. मैंने उनका उनका नंबर लिया खातून का. मैंने उनसे बात की. मैंने कहा कि इस तरह से है मुझे वीजा लगवाना है. तो कहती हाँ कोई नहीं 15 दिन में लग जाएगा और 4 लाख. मैंने जस्ट प्रिटेंड के आई एम सम लेमैन और मुझे वीजा या. लगवाना है कनाडा का. तो शिव ने पूरी यही एग्जैक्टली पूरी स्टोरी सुनाई मुझे. और मैंने कहा कि अच्छा. अब मैंने कहा बाकी 15 दिन के बाद जाती. कहती है हाँ मैं अभी आई हूँ परसों वापस आई हूँ और मैंने अपने अप्रूवल से निकलवाए हैं और मैंने तो एक बंदा कनाडा भी भेज दिया विदाउट वीजा स्टैंपिंग. है. तो उनका स्टैंप भी नहीं हुआ था. उनका वीजा विदाउट कनाडा वीजा में स्टैंप. स्टैंपिंग. अच्छा. यस. उनका वीजा कनाडा में स्टैंप हुआ. मैंने उनको पहले अप्रूवल निकलवा के भेज दिया उनको. मैंने कहा अच्छा. देन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ के लाइक आई एम द लाइसेंस कंसल्टेंट और ये ब्ला ब्ला. देन शी वाज लाइक अच्छा नहीं देखे ना एक आपके सेलिंग टूल होता है एक हमारी मार्केट होती है आप हमारी मार्केट में क्यों आ रहे हैं और दिस इज हाउ आई सेल माय प्रोडक्ट आपको बीच में नहीं आना चाहिए. मैंने कहा व्हाट आई डू आई कम एंड विजिट यू समडे. और उस दिन के बाद से उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया.
I mean, like she wasn't selling any product at all. She was हाँ, selling she the was idea of moving to looking Canada, but there was like nothing that she could substantiate her exactly. claims on. I think she agreed to it कि मैं तो मेरी market फर्क है. हाँ, शी वाज क्लियर कि आप अपने जोन में रहे, मैं अपने जोन में रहूंगी, आप क्यों इंटरवीन कर रहे हैं, और आपको पता है बिजनेस कैसे होता है. And I was like, अच्छा ठीक है. The worst part is people are going to her, people are paying her for 4 लाख रुपए for the visa, and I was like, okay. Hmm. अब इस तरह के लोग बैठे हुए हैं और लोग उनके ट्रैप में आ रहे हैं, तो आई Hmm. ऑनेस्टली वुड नॉट इवन लाइक ब्लेम दोज एजेंट्स अ लॉट. इस तरह के लोग भी मार्केट में हैं जो कि हाँ इस Hmm. स्टोरी को बाय करते हैं, तो व्हाई विल नॉट दे सेल इट. हाँ, तो exactly. ये मतलब लाइक देखें वो इंफॉर्मेशन वाली बात ही है ना. नाउ इन दिस डे एंड एज व्हेन यू हैव एक्सेस टू यूट्यूब एंड व्हेन यू हैव एक्सेस टू द कंपनीज और इन दिस सिचुएशन द कंट्रीज इमिग्रेशन वेबसाइट व्हिच कैन गिव यू द मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन. Why not just visit that website, go through the major like requirements, prereqs once, and before you get into a conversation with any agent. जरूरत क्या है? अमर, टू बी ऑनेस्ट, ये होता नहीं है. व्हाई? Hmm. अगेन, अगेंस्ट पाकिस्तानी जाए मैं पाकिस्तानी, राइट? बट Yeah. फॉर्चुनेटली वी आर यूज्ड टू बीइंग स्पून फेड. हमें हर चीज तैयार चाहिए, हमें खुद एफर्ट नहीं करनी है, हमें हर चीज बस तैयार चाहिए, कोई हमें करके दे दे. सो दैट्स बेसिकली द प्रॉब्लम, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर द पीपल एक्सप्लॉइट. उनको लोग आते हैं, लोगों को दे जस्ट टेक देम फॉर अ राइड, जो मर्जी बोला बन Hmm. जाएगा, दो चार तस्वीरें लगा दी कि हमारे अप्रूवल हो गए हैं, एंड पीपल Hmm. जस्ट बाय. दे Hmm. हैव जीरो रिसर्च के ठीक है बंदा लेजिट है नहीं है, स्टोरी बिलीवेबल है कि नहीं है. मतलब हु हैज एक्सेस टू गो टू लाइक एम्बेसी, टेक द फाइल्स आउट एंड गेट इट अप्रूव्ड? नोबडी. Even if you go to बीइंग अ Dubai. लाइसेंस कंसल्टेंट, बीइंग अ लाइसेंस कंसल्टेंट, मैं उनको डिस्कशन में कहता हूँ आई हैव गॉट जीरो इन्फ्लुएंस ऑन योर फाइल प्रोसेसिंग. What Hmm. all I can the best profile up and just like wait for them to decide on it. I have zero influence. किसी का कोई influence नहीं हो सकता वहां पे, because you Hmm. never know where the file is. अबू धाबी में Hmm. फाइल है, पोलैंड में फाइल है, यूके में फाइल है, इस्लामाबाद में फाइल है, कनाडा में फाइल है. nobody knows where exactly it's going. Hmm. और किस ऑफिस में जा रही, किस किस ऑफिसर के पास जा रही है. बट like there are people who believe such stories कि हाँ हो जाएगा. हाँ हो जाएगा एग्जैक्टली exactly. वही वाली बात है यार कि मतलब इट्स वी आर सो यूज्ड टू बीइंग स्पून फेड के वी डोंट गो एंड वी डोंट लुक फॉर दैट इंफॉर्मेशन व्हाटएवर वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू और उसका जो होमवर्क करना होता है वो हम जो है खुद करने से डरते हैं. कौन करेगा? हाँ, कौन करेगा? होमवर्क कौन करेगा? बस. नहीं वो बात है ना फिर होमवर्क कर लिया तो फिर वो कहीं तो मतलब लोगों को ये भी तो लगता है यार हम खुद कर लेंगे सारा ही. Honestly speaking, it's a DIY. अच्छा. मतलब विजिट वीसास हो गए, इवन एफएसडब्ल्यू एक्सप्रेस एंट्री इज अ डीआईवाई. हम्म. कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई कुछ नहीं होता. हाँ, वेयर अ कंसल्टेंट हेल्प्स यू इज लाइक कीप योर थिंग्स ऑन ट्रैक. फॉर हम्म. एग्जांपल, in your life you're working somewhere, you got some business, आप काम कर रहे हैं, probably हाँ अच्छा मैं कल डॉक्यूमेंट बना लूंगा, टाइम नहीं मिला, भूल गए, and then eventually goes on the back burner. A consultant with these applications, what he or she does is कि हाँ they keep after you get मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए दो, मुझे ये चीज तो चाहिए, I need, and they make sure that you reach your point. या जो भी step level है you reach there. ओके. But if you have time, you have access to information, जो basic applications है, visit visa हो गया, FSW हो गया, it's all DIY. राइट 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 राइट. अच्छा ये तो हमने बात कर ली चले आइल्स की बात हो गई. व्हाट अबाउट लाइक masters? I mean, what about qualifications? What about those people who do not have a master's degree in Pakistan? They only have done like their bachelor's and they have an honors degree, let's say. So kya is immigration for them too, or should they go for a master's first and then go for immigration? there there is an option. There is an option which being like थोड़ा सा market में भी कर भी रहा हूँ. The one who's done a bachelor's, like 4 years bachelor's, Yeah. uh, basically it's a point-based system, right? So bachelor's or master's में there's a difference of 30 points. Okay. So that 30 points matters a lot. But Acha acha acha. for immigration, there are 3 steps. Either you're a bachelor, or you have a 2 or more degrees, and then you have a master's. Mm-hmm. The 2 or more degrees, that usually what I do is I get them a UK level 7 diploma, or you can get a diploma from Allama Iqbal Open University, Virtual University, जो भी diplomas हो रहे होते हैं एक एक साल वाले, you Acha. can always get them. अब जो UK level 7 diploma, that's like a 3 to 4 months thing. Online assignments होते हैं, you submit the assignments, you get your diploma. That diploma will get you 24 points. So now you're only 6 points away Okay. from masters.
Acha. So Okay. ये So it brings you somewhere between closer the, to it. somewhere in the middle. Exactly. होता है क्या, जैसे when I said कि 8777 IELTS is what's required for FSW primarily. तो आपने 24 points यहाँ से लिए. Then from you jump from CLB 9 to CLB 10 in IELTS. The difference of CLB 9 and 10 is 12 points. So eventually you're getting 12 points from there. जो आपने 3-4 महीने का diploma किया, you're getting 24 points from there. So you Okay. are 30 to 2 to 3 4 points extra than a master's. So Mm-hmm. that's how you get the gap in 6 months. Acha. Otherwise, you have deep pockets. You can always go for a master's in Canada. But again, if you like, मुझे थोड़ा सस्ते में काम करना है, I need to go on PR, then you can do a diploma. You get 24 points. You improve your IELTS. You get 12 points from Mm, there, and then. But there is a hope there. It can be done. it can be done. लेकिन आपको like करना पड़ेगा, मुझे जितना समझ आ रहा है, if Yeah. somebody is bachelor's, आपको you'll have to go for a diploma at least. Yes, because again, it's a point-based system, right? It's very clear cut. Mm, You have like, last draw was on I think 486. So mm, typically, if you're on 460s, 470s, you don't have a chance. So you have to mm. improve your points. So like with education, you can do a diploma to increase your points. Other than that, you have your IELTS. You can improve your IELTS to increase your points. यही दो Mm. चीजें हैं. You cannot increase or decrease your age. You cannot experience it 3 years or more. So if you Yeah. have, you already have maximum points, you cannot do Yeah, anything there. yeah, yeah, The only exactly. thing at hand is your IELTS or maybe your diploma. If you have a bachelor's, you can do a master's, or you can do a Yeah, diploma and you can. So that's the only way exactly, about it. exactly. Those are the only two variables you can play with. Hmm. Exactly. अच्छा अली ये बताएं कि अब cost is also a major issue, especially for people in Pakistan and in the backdrop of whatever has happened in the economy in the past 2-3 years. The money, the Pakistani rupee has devaluated like it's nothing. Or I think it's all the more difficult for people to arrange funds because I think in Canada, if you're applying for the Canadian immigration, you need to show that you have the kind of funds that they are asking for, and that's a hefty amount. तो क्या है मतलब उसमें अगर अगर मैंने पूछना हो कि अच्छा अली आज अगर कोई बंदा जो है वो कनाडा जाना चाह रहा है व्हाट इज द काइंड ऑफ मनी ही इज लुकिंग व्हाट इज दैट फिगर ही इज लुकिंग एट All right. Again, I'll just walk you through the options we have. For example, if you're looking for a study permit, a study permit on average, if you're going for a PGC or a PGD, the year one expense what you're looking at is $30,000. ओके Right? And $30,000, your fee would be somewhere between $15,000 to $18,000. $2,000 we always keep for your miscellaneous expenses. That includes consultation, your visa fees, your IELTS, XYZ documentation. So 2,000 is there, and अच्छा there's a $10,000 GIC. GIC is you're paying year one's expense upfront, even though you will get that 10,000 back in year one, but eventually today it's your expense. So altogether, a राइट ballpark figure of 30,000 is something you need to look at while you're going for the study permit. अच्छा If you talk about FSW, that is the cheapest option, and what you're looking at is somewhere around in government fees, you are somewhere around looking at $4,000 to $5,000. ओके And if you add consultation, so somewhere around like 7-8,000, you can wrap it up your FSW application. That's there. PNPs, the same price point. It's the same government fees and everything for PNPs as well. So that's exactly 70,000 what you're looking at for FSW. If you're into a work permit, obviously, if you're getting a work permit, if you're getting it legally, then obviously it's free. If you somebody is into buying a work permit from someone in Canada, obviously you're अच्छा paying a price for that, and it राइट varies a lot. ओके That's basically buying a work permit वाली जो जगह है ना, that's where a lot of agents are not doing a great job. वो लोगों को फंसा लेते हैं कि 10 लाख दे दो 12 लाख दे दो 15 लाख दे दो and we'll get you work permit and you keep running after them but eventually nothing happens. So that's a very gray area. A lot of people are not into it, but a lot of agents are into it. A lot of consultants you won't see work permit or helping you with the work permit. Rather, they would say, "Okay, if you're spending good money, go towards a startup visa." And like या towards startup visa will cost you somewhere around $75,000 to $80,000 ओके for the whole family. The whole family is going together. You get a work permit, you get your PR sorted. So then there's a price to it, obviously. एब्सोल्युटली तो वो कितना मतलब like what is the price ticket that we're looking at 75 to 80,000. Basically, 75,000 is a consultation side that includes your incubator fee, that includes your business idea fee, that includes your different fees there, the business plan, the marketing side, the university fee in there, the incubator fee.
The also figure is 75,000 per family, and in terms of government fees, it's somewhere around $4,000 to $5,000, depending on the number of children actually. Mm-hmm. So 5,000 is what you're shelling out. So for example, a startup visa will should be costing you around 80,000. Mm-hmm. Uh, WNS, PNP will cost you around 7 to 8,000 max. Right, right. Figure is around 30,000. And if Mm-hmm. you're going for a master's will cost you around 35 to 40,000. Because master's degree fees is generally more than of a diploma. Mm-hmm. Exactly. But at the These end are of the the day, numbers. मतलब you're providing like 360-degree services. मतलब सारा कुछ आप जो है वो cover कर रहे हो. It's nothing that they are doing on their own, right? Exactly, yeah. So for example, I'm licensed for anything and everything for Canada. So like whatever it is for Canada, I am there to help you out. I'll give you the whole roadmap. What are Mm-hmm. the like milestones? What are the documents required? What's the fee and payment structure would be like? From end to end, I'm there. अच्छा ये वैसे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था कि why should somebody come to you, like you're saying you are a certified consultant, you have a Hmm. license for this, so Hmm. why should somebody come to you and not go to any other agent? मेरा licensing ठीक है, but कोई ये भी तो कह सकता है यार I have all that information that a licensed agent would have, then why come to you and not go to that agent? Just a question. I get come across this question a lot. A lot of Yeah. people ask me this. So obviously, being licensed, I charge a little extra premium there. हाँ And early you are a little expensive. बाहर तो उतने में कर रहे हो. हाँ ये उसका the क्वेश्चन तो main बहुत आता होगा भाई, ये मुझे सस्ता कर दो थोड़ा सा. exactly. So uska the main point is like going with a licensed consultant. Number one, any RCIC who is licensed as a regulated Canadian immigration consultant, only an RCIC is authorized to solicit advice on Canadian immigration by the government. Okay. Right? No agents can do it. No ghost consultants can do it. Only RCICs are allowed by the government Okay. of Canada to solicit advice, to do consultation, to fill out the forms, to submit forms, to communicate on the client's behalf with the IRCC. So that is number one. Mm-hmm. Number two, for example, अगर हम बात करते हैं agent की, Yeah. agents, for example, to get a license, I had to go through a course. I did a year's course. Then I had to go for the licensing exam. Okay. Then they all the background checks on me. It was almost a 2 year process to get the license, right? So uske Right. baad, the best safety net you have. For example, if the client is coming to me and saying, "Hey, Ali, what's the difference between an agent and a consultant?" There, I would always say, like, if you're working with a consultant and something goes south in the process, like I messed up the case, they Mm-hmm. always have a safety net of IRCC. They can always approach IRCC with my name that Ali Shah, okay, here's a retainer. I signed it with Ali Shahab. He handled my case, and it's not going as per the plan. Here's the license number. He's your guy. Investigate. And the Okay. first thing IRCC or the CI, our body's name is CICC. So what the first thing CICC will do is put my license on hold while And they're they'll investigating. investigate. Exactly. They will thoroughly investigate Right. what exactly happened, why it happened, where did I ठीक go है. wrong. Right. Eventually, if I make a mistake, I have to refund everything and I have to like withdraw from the case. So Hmm. there's a safety net. As compared to an agent, agent के पास आप जाएंगे, they have no registrations, they are not backed by any bodies, they are not licensed for anything. खुदा ना खास्ता if they screw up your case, they mess up your Hmm. case, what will happen? Mm-hmm. आप ज्यादा ज्यादा किसके पीछे भागोगे? उस बंदे के Yeah. पीछे. Taking your calls, you have no other safety net कि आप किसके पास Mm. approach करो. The last thing only the influential people can do is go to FIA. कि FIA से complain करनी कि this is what FIA. happened to me. Otherwise, Yeah. not everybody is influential. They can approach FIA and FIA takes an action on them. And especially in a country like Pakistan, it's like everybody says once you've given your money to somebody, it's like totally impossible for you to get it back. Exactly. Even if you go to That FIA, is I'm not sure. I'm not questioning the authority or anything or the veracity. But still, like it's not convenient to get your money back from somebody else's pocket. true that. और दूसरा ये भी होता है कि since being licensed, I cannot charge the client until unless I have like rendered the service. Acha. We have a set of milestones. Right. Yes, we have a, for example, if I'm charging like $1,000 for a visit visa application, so there will be like 2 to 3 milestones in between. One is a retainer, one is when we submit all the documents, we mutually agree on a milestone. Yes, we have reached a milestone. I'll agree, I'll raise an invoice, they agree to it, then they will clear it off. They'll pay me. Otherwise, जो agents होते हैं, they just take all the money in advance कि ठीक है आप मुझे दे दें, and then we'll walk upon it and they keep on running after you का पैसा लेके जवाब नहीं दे रहे मुझे. So the license consultant always will be a milestone-based payment. When we mutually Oh. agree that yes, we have reached a milestone, then they pay me up.
then they pay you up. So एक थोड़ा सा वाला भी बेहतर हो जाता है कि yes, like you're not paying everything upfront. आपकी Nah. चीजें milestone पे जा रही हैं, you can see the progress exactly what's happening with your file. Okay, for example, if you reach milestone 2 or milestone 3, you know exactly you've reached a certain point, and you know exactly how many milestones are there. So like your journey is about to end. So Mm-hmm. वो आपको थोड़ा सा एक edge उसमें मिल जाता है with the consultant. Thirdly, consultants, we keep on getting updates from IRCC, from CICC every week. So we are updated with the knowledge, whatever is coming from the source, we are getting Mm. it, we are getting the first hand. उसके बाद we like talk to our clients. Fourthly, it comes to documentation. Whenever a file, because any, for example, if Amar, if you're applying for anything for Canada, right? Mm. Anything goes through my portal, we have a paid rep portal. So we apply through a paid rep representatives portal there. So we have a Okay. separate portal. Acha. Probably if you're doing it on your own, you'll have a separate portal. So anything going through our portal, the case officer knows that a certain degree of vetting has been done on the file. क्योंकि license Okay. consultant है, those सारे documents vet किए हुए हैं. ठीक है, So they ठीक know है. exactly, yes, I can rely on it as compared to the other portal. Yeah. Up for $1,000 for a visit visa, I will not be faking any documents. For the reason मैं $1,000 के लिए अपना license stake पे नहीं लगाऊंगा. उदाहरण Hmm. खास से down take catch up. For example, I fake a bank statement. मैंने Photoshop किया, bank statement लगा के भेज दिया. तो उन्होंने पकड़ लिया. Eventually, obviously, they'll put a ban on the client. Number one. Number two, they'll hold my license too. क्योंकि it's going from my portal. They know exactly who filed for the application. So I Yeah. will not be faking documents, or any licensed consultant for that matter will not be faking any documents Yeah. because Yeah. they don't want to risk Exactly. a license for $2,000, $3,000 fee. They will not be risking it because it's a bread and butter. On the other side, जो agents होते हैं, they have nothing to lose. The license which don't have, वो stake पे नहीं है, उनकी company की कोई stake पे नहीं है. खुदा Hmm. ना खास्ता it's on the applicant. Applicant पे Yeah. ban लगते हैं 5 साल का. Agent all would says I'm sorry, या वो गलती I'm से हो sorry. गया, गलत डॉक्यूमेंट. Because they're not And responsible to CICC, right? exactly, they're not Until, answerable to anyone. they're not answerable to anyone. They're not under anyone's radar, and they can just move away from this business and can start up something else the very next day. हाँ, उन्होंने फेज 5 में बंद किया, फेज 6 में जाके खोल लिया. Nobody will ask any question. So that's an issue. And most of the consult agents, they actually put up fake documents. Hmm. उनका थोड़ा सा जो मॉडल है वो थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव होता है. फॉर रीजन दे आर लाइक हम लोग डन बेसिस पे काम करेंगे. वीजा लग गया तो पैसे दे देना, वीजा नहीं लगा तो पैसे ना देना. अब लेकिन दैट इज समथिंग. फिर है ना कि शुरू में थोड़ा सा आपने वैसे वो द वन दैट यू वर सेइंग टॉकिंग अबाउट उसके 4 लाख देने थे उसमें 2 लाख आप शुरू में दे रहे हो. एग्जैक्टली, हाँ. उसका ये ना कि 2 लाख मैंने भी दिए, 2 लाख मैंने बाद में देने, कोई मसला नहीं है. बट फॉर एग्जाम्पल आई कम अक्रॉस पीपल अगेन द रूरल साइड जो है, वहां पे क्या होता है, विजिट वीजा लग गया, 20 लाख रुपए दे देना. एंड देयर अच्छा. आर पीपल हु आर बाउंडिंग फॉर दैट कि ठीक है, विल पे यू अप 20 लाख रुपए, एक मतलब वीजा लग जाएगा. व्हाट दे डू इज लाइक वो महीने साल के 100 वीजा अप्लाई करेंगे. 100 में से अगर उसके 5 वीजे भी लग गए तो ही अर्न 1 करोड़ रुपए, राइट. लेकिन जो 95 वीजा रिजेक्शन आई, ही हैज नथिंग टू लूज. उसका या. तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. हाँ. So that's the way of it. Exactly. काफी सारे loopholes हैं. And recently, again, I will not name a company. There was a quite renowned company apparently. They had office in Islamabad, Lahore, Karachi. A-list TV stars of Pakistan were endorsing it. Oh. और recently 4 महीने पहले FIA उसको literally they tracked him out of the office. उसकी वीडियोस हैं, उसकी CCTV वीडियोस हैं. FIA literally dragged him out of the office क्योंकि he was duping people के 12 लाख रुपए में मैं आपको कनाडा भेज दूंगा, 6 लाख आप अभी देंगे, 6 लाख आप मुझे बाद में देंगे. सो एजेंट्स का ये होता है. मतलब इवेंचुअली होता है कि 2 4 5 लोगों से डिफरेंट डिफरेंट मार्केट से लोग जमा करते रहते हैं. उनका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इज अप द रूफ Hmm. के यार ठीक है, कोई नहीं पकड़ा, चल रहा है काम, लेट्स गो. इवेंचुअली डे विल कम कि कोई एक वो यार तगड़ा सही. बंदा उनको पकड़ेगा Yeah. एंड देन दे विल ट्रैक देम. कोई Exactly. एफआईआर They बंदा. just need one right head at the right place. So that's what happened with the company. Obviously people know about it जो Mm-hmm. असल में है. And it was a pretty bad picture because like I lost 3 clients to it. वो like अली भाई, you are charging a lot, वो तो 12 लाख रुपए में बेच रहा है. I was like, Yeah. please. And you were charging how much at that time? I was charging approximately 7 million. Like, but you had the right way of sending people out. Exactly, yeah. I had like employees on board who were like agreeing कि ठीक है, we'll support them with the work and everything.
और सारा प्रोसेस वो चल रहा था, वाज अप्रॉक्सीमेटली 7 lakhs दे, 7 million दे, और उनको वो Yeah. दूसरी चीज 12 लाख में दिखा रहा था। वो दिवस है अली भाई आप तो बहुत महंगा दे रहे हैं, हम Mm. उनके साथ जाएंगे। लाइक प्लीज गो ऑन, गो ऑन। और दे वर द वन हु सेंड मी द वीडियोस, लाइक 4 महीने के बाद दे सेंड मी द वीडियोस कि देखो अली भाई एफआईएल उठा के लेके, अब Mm. देखते हैं आगे हैप्पी नाउ, नहीं नहीं इट हैपेंस अ लॉट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल। नहीं वो तो खैर आई थिंक उसमें तो कोई क्वेश्चन है नहीं, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाई दे शुड generally at least make an effort to get into business with people who are certified for that, and they're at least under somebody's, under the right authorities radar, so that you Yeah. can question them, you can at least track them, you can have their license put on hold and have them investigated if they mistreat you, if they miscommit with you, if things go south intentionally. Yeah. So They do that check. is, and that brings us down to the last question, Ali, and we have been talking about it before, while we were discussing about this podcast. So there's this immense need for the US dollars, for the foreign remittance, flowing into Pakistan, because there doesn't seem to be. I mean, I work for the manufacturing sector, and I have worked in the education sector as well. I have friends working across multiple trade sectors, working at some of the finest organizations in Pakistan. But the picture still seems pretty bleak, in the sense that it's literally. Amar, to be honest, why doesn't sound paid? If you compare stats, like for example, if you compare with our foreign remittance to India's foreign remittance, India is like almost $94 billion a year. Mhm. Pakistan is approximately 29 or $30 billion foreign Mhm. remittance, if I'm not mistaken. Mhm. Pakistan's again, I've got the numbers from the internet, but Pakistan's overall jitna bhi in exports banata hai, that's Almost, cumulatively it's 26 billion, yeah, right? 26 So to 30 billion US dollars. That's it. the foreign remittance is equal to what the whole Pakistan is making in Pakistan. So why not export? Why not export people? I would say like 3 years back, I was talking to one of the government officials in Pakistan, in Punjab, and he was like, "We have a mandate from the federal government back then that we have to export people to the West. Primarily, what we're exporting people is to the Middle Eastern side, where they are comparatively lower wages. But back then, they had a mandate that we have to shift our focus from Middle East to the Western side, because that's something proper. It should be a proper industry. Like Acha. you are exporting people, you are exporting up. People usually call it's a brain drain. In my opinion, okay, let it be brain drain. But again, if they're sending you money to run your country, why not? That's what Mhm. exactly you need. As of today, you need money to run the country. And if you have more foreign remittances, proper channels, people are sending money back to Pakistan, what's better than that? Again, we are overpopulated. We don't have enough opportunities. Like, har saal, like, we have a new crop of children coming out of school. Universities se graduates, and there are no proper jobs for them. So why not Mhm. export them? You can initially, we are getting a fresh crop every other day. जो हमारे पास नहीं पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी बढ़ रही है, Yeah, सो yeah, वी yeah. शुड एवेन्यूज, यस वी शुड हैव एवेन्यूज विद इन पाकिस्तान जहां पे उनको कंज्यूम कर लें। बट अगेन इफ वी सी एक्सपोर्टिंग ह्यूमन कैपिटल एज एन इंडस्ट्री, कि हम Mhm. लोग अच्छे सॉलिड माइंड्स वो गोइंग आउट अर्निंग मनी दे एंड सेंडिंग इट बैक टू द फैमिलीज इन पाकिस्तान, व्हाई नॉट? इट्स अ विन विन सिचुएशन, इट्स अ विन विन फॉर देम, इट्स अ विन विन फॉर पाकिस्तान। मतलब आपकी पॉपुलेशन का एक मेजर चंक हाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बट इवेंचुअली दे विल कम बैक or they will send remittance to Pakistan, and that will make help you make other opportunities. So it should be shaped up into an industry as compared to मतलब again you are looking एक coin को देखने के दो तरीके हैं, right? One side you can say it's a brain drain, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, सारा ज़हीन Mhm. लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और क्या Yeah. हो रहा है? अगर फॉर एग्जाम्पल को ज़हीन लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, they're unemployed. Ah. Yeah, yeah, No, yeah. they're not adding to anything. So it's better if you send them outside. They go there, they establish themselves. वहाँ पे businesses on करें, jobs करें, then just remit money to Pakistan. That's एग्जैक्टली exactly exactly. what India यही is वाला doing. क्वेश्चन, यही वाली बात है ना, कि अगर ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान से हो रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक कि जो लोग पाकिस्तान में रह गए हैं, who have not who've chosen to live in Pakistan and not explore better opportunities outside Pakistan, equally qualified, extremely brilliant and have the right prospects, उनके साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? तो that's also a question. वो कौन सा कोई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जो है वो contribution कर रहे हैं, and at the end of the day whatever they're trying to contribute, even if they are,
though they're making their contributions are coming in the form of Pakistani rupee, which is already quite devaluated, if to be very honest. Exactly. But basically, the point is like, okay, पढ़ा लिखा बच्चा होता है, he doesn't find the right employment in Pakistan. Eventually, frustration is what going there, and then that frustration is being translated into different other things. मतलब आपके यहाँ चोरियां बढ़ रही हैं, आपके यहाँ दूसरे इश्यूज बढ़ रहे हैं, Hmm. एक ओवरऑल एक आपकी सोसाइटी जो में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है. इट्स Yeah. ऑलवेज लाइक, मैं इंडिया एग्जांपल क्यों देता हूँ, यू सी ऑल द सीईओज आउटसाइड यूएस में मेन कंपनी सीईओज आर इंडियंस. व्हाई? बिकॉज देयर अर्लियर जनरेशन वाज देयर, उन्होंने वहां पे पढ़ा लिखा, नाउ दे आर इन द गुड पोजीशंस एंड दे आर हायरिंग पीपल. मतलब माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ऑल द मेजर कंपनीज दे आर हायरिंग इंडियंस लाइक एनीथिंग. व्हाई? और उसका इवेंचुअली ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या हुआ? दे हैव बैंगलोर में दे हैव अ बिगेस्ट आईटी इंडस्ट्री, राइट? व्हाई? Mm-hmm. बिकॉज दे हैव अ कंजम्पशन इन यूएस. वो लोग यहाँ Yeah. पे ट्रेन करते हैं. But that they They can started export off their services to the US, to the exactly West. how it started. People in, for example, India, Bangalore, they went to US, they studied, they reached a certain level. वहाँ के बाद they are outsourcing it back to India. So it's a Mm-hmm. two-way thing. They're sending their remittances, then develop the IT industry in India. So why not Pakistan can do the same thing? आप अच्छे लोगों को बाहर भेजें, they go establish their businesses, they join bigger firms, and then eventually once they're in a position, तो वहाँ से they can always send you the contracts. Care like okay, we'll do the work locally as well. आपकी local industry flourish Okay. होगी. But again, it has to be like coming from the top, this direction, coming from the top. Yes, we need to see human export as an industry, not just something a brain drain और उसके पीछे आप छुप जाएंगे कि it's a brain drain, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है. Exactly. Rather, be optimistic and think on the other side. Exactly, especially when you have people who are qualified, especially when you have people who have the hunger for it, who have the fire for it, and they could prove as the country's assets. So why not? And they have, exactly as you have mentioned. You've given me the stats. कि भाई $29 billion US की जो remittances जो हैं वो आ रही हैं. I mean, that figure is bigger than the total exports that we have right now. We need a clear direction from the top. Yeah. Yes. Like this Yes. is Yes. what we're doing. Next 10 years, that's our focus. If we are sending people to Middle East, we should be sending people to the West. Mm-hmm. And eventually, 5 years, 8 years, 10 years down the line, you'll start reaping the results. Exactly. Absolutely. And Ali, thank you so much for joining us for this wonderful, very eye-opening discussion. But what if somebody wants to get in touch with you? What would be the best way to get your services? Again, Amar, thank you very much for having me here. They can always come to me on askali.ca. That's my portal. They can touch base with me on the Insta. Again, the same handle, askali.ca. Ask Ali. That's there. I have a company called Ahlan Canada, but again, yeah, ask Ali anytime. You can soon, inshallah, you'll see it all across social Inshallah. medias. Yeah. So askali.ca, that's my website. The social media handles are there. You can always reach me there. Anything and everything, I'm always there. Honestly, it looks expensive going to a consultant, but it's not. Consultation is mostly free. You can always come, talk to me, get your head clear. And then Yeah. once you start the process, we inshallah will get it there. And I think that's better than falling into somebody else's um, crap, Exactly. if that's a crap. True. Chale, bilkul sahi. Thank you once again, Ali. Take good care of yourself, and I hope that whatever we have discussed today, people will get the max benefit out of it. Inshallah. And that's exactly what we're hoping for. We are just giving a scope of hope at Askali.